Okay, so session 3. We have so far divided the world around us into two categories. We said that there are things that are substances, and we said there are things that are particles. And we said that substances have matter, which shows itself as solid, liquid, gas. And all of that is just substance, right? And we understand how that gas behaves. And from that, as an extension, we understand how solid will behave or how liquid will behave to some extent. तो हमें मैटर की डिफरेंट स्टेट्स का पता है, वो हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो सब्सटेंसेस हैं, वो सारा का सारा वो है जो आप देख सकते हो, फील कर सकते हो. दैट्स द थिंग दैट गेट्स हॉट और कोल्ड. दैट्स द थिंग दैट produces sound when you hit it. That's the thing that is malleable, that is ductile. That's the thing that flows. That's the thing that you compress. That's the thing that has pressure. That's the thing that has volume. वो सारे का सारा substance है, वो सारे का सारा particle नहीं है. और काइनेटिक थ्योरी कहती है कि वो सब का सब एक्चुअली में पार्टिकल से बना हुआ है. एंड द पार्टिकल्स आर इनसाइड देयर, wiggling around in solids, moving freely but sliding over each other in liquid, and moving freely and randomly in gases. And those particles are what make everything up. And the reason they stick close together in solid is because of strong force of attraction. And the reason they go far away and they are really far apart, or the gases take a large volume, is because of the particles being very far away from each other and the forces being weak. So distance aa gaya, uske force of attraction aa gayi, और at the end of it particle की movement जो कि kinetic energy से आती है वो आ गई. How are they related? We talked about the idea that temperature is related or directly proportional to average kinetic energy. तो इसका मतलब है कि पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है, सब्सटेंस के पास टेम्परेचर है. पार्टिकल के पास डिस्टेंस है, सब्सटेंस के पास क्या है? वॉल्यूम. पार्टिकल्स के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सब्सटेंस के पास है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी. वो सारे का सारा पार्टिकल की बिहेवियर से बन रहा है. सो दैट मीन्स पार्टिकल्स जैसे मर्जी हो, इफ दे आर ऑल मूविंग फास्ट, तो वो सब्सटेंस, चाहे वो प्लास्टिक है, चाहे वो वुड है, चाहे वो आयरन है, as long as the particles are moving fast, they have high kinetic energy, वो हॉट हो जाएगा, उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा. अगर पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो सब्सटेंस की स्टेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी. अगर पार्टिकल्स की फोर्सेस ब्रेक डाउन हो रही हैं, सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो जाएगी, उसका मेल्टिंग, बॉइलिंग, वो सारा कुछ हो जाएगा. वी टॉक्ड ऑल अबाउट दैट, राइट? सो सब्सटेंस एंड पार्टिकल. सो पार्टिकल के लेवल पे हमने अभी डिटेल में नहीं देखा. वी आर जस्ट सेइंग पार्टिकल है, उसका बिहेवियर सब्सटेंस के बिहेवियर को कॉज करता है और गवर्न करता है. द वे द पार्टिकल्स आर, दैट गवर्न्स द सब्सटेंस. Now we're going to move a little bit deeper. But before we do that, did we do evaporation last time? Like, do you understand the difference in evaporation and boiling? Yes, sir. Okay, so do you understand that evaporation is only for the high energy particles and boiling is only for all the particles gaining energy? All right. So coming back to this, substance होता है, particle होता है. Substance को हम बोलेंगे कि this is the large scale things. ये वो है जो मैं और आप देख सकते हैं, experience कर सकते हैं. Particle वो है जो कि हम देख नहीं सकते हैं. Like we have the technology to do that. हम atom को देख सकते हैं. But particle की जो properties हैं, उससे substance का behavior govern होता है. और chemistry particles की base पे substances के behavior को control और समझने का नाम है. Now, this substance, we are going to divide it based on the particles into two categories. We're going to say this is pure and this is impure. So, substance को हमने particle की base पे pure और impure कर दिया. What's the difference? Pure things have only one kind of particle. So, I would say, आप अगर note कर रहे हो तो on your notebook half page इस diagram के लिए छोड़ देना, because I will keep on adding to this diagram. And then write the definition of what a pure substance is. So a pure substance is made of only one kind of particles. A pure substance is made of only one kind of particles. मैं आपको notes भी भिजवा दूंगा. Now here's the thing. Kind of particles तो हमें पता ही नहीं है अभी तक.
हमें तो सिर्फ पार्टिकल का पता है. So what are the kinds of particles? So the kinds of particles are atom, molecule, and ions. These are the three categories that we are going to have for particles. Later on we will study कि अच्छा एटम से मॉलिक्यूल बनता है तो उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, एटम से आयन बनता है तो उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और अगर अकेला एटम है तो वो प्योर एलिमेंट बनाता है, और अगर मॉलिक्यूल है तो वो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों बनाता है. वो हम सारा बात करेंगे, बट अभी सब सिर्फ हमें ये समझना है कि पार्टिकल्स आर ऑफ थ्री कैटेगरीज: एटम, मॉलिक्यूल, आयन. एक एटम है तो वो ये, मल्टीपल एटम्स हैं और चार्ज नहीं है तो मॉलिक्यूल है, और एटम्स हैं और उन चार्ज है तो आयन है. सो थ्री कैटेगरीज. इसमें अकेला है, इसमें मल्टीपल है विदाउट चार्ज, और इसमें विद चार्ज है. मल्टीपल भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, बट चार्ज होना चाहिए. ठीक है. सो अब जरा देखते हैं. In within these pure things, we are further making a category: element. What's an element? Element is anything that can have this, this, or this, but only one of them. So neon की बात करो, so neon is made of only neon atoms. Hydrogen is made of only hydrogen molecules. Iron is made of only iron ions and electrons. बट सिर्फ एक कैटेगरी की चीजें हैं. अगर दो कैटेगरी हो जाए, ये वाली कैटेगरी नहीं हो, सो दैट्स कॉल्ड अ कंपाउंड. सो सेकंड वन इज कंपाउंड. अ कंपाउंड कैन बी मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल और वन काइंड ऑफ आयन. उसमें एटम्स नहीं होते हैं. सो सोडियम क्लोराइड में हमेशा सोडियम और क्लोराइड आयंस होंगे. वाटर में हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे. बट अगर किसी चीज में सिर्फ एक ही तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल या आयंस हो जाएं, सो दैट इज एलिमेंट. एंड अगर मल्टीपल काइंड्स आपस में ज्वाइन कर जाएं और या मॉलिक्यूल्स बन जाए या आयंस बन जाए तो वो कंपाउंड्स है. एंड थिंग्स दैट आर इम्प्योर, दोज आर गोइंग टू बी कॉल्ड mixtures. So we'll stop there. I feel like this is a lot to take in. Element and compound. These are the ones that have just one kind of particle, and that is why they're pure. Impure means multiple kinds of particles. Yani ki atoms bhi hain, molecules bhi hain, ions bhi hain. They're all mixed together. And that is what makes mixture. Mixture की भी बहुत सी types हैं. Compounds की भी बहुत सी types हैं. Elements की भी बहुत सी types हैं. And as we move along, we will explore these. But abhi ke liye, I want to talk about just one of these particles, the very first one that I wrote. Does anybody know what that is? Does anybody know the fundamental particle that makes everything up? Atom. Atom. Yes, this one. What is so special about the atom? Why are we so obsessed with the atom? As a chemist, what is it about the atom कि हमें वो बहुत ही fascinate करता है? Can anybody tell me what atom is? Sir, an atom has a nucleus inside it which has protons and neutrons, and it has electrons that orbit around the shells around the nucleus. ये सारा लेक्चर ही आपने बता दिया. एक बंदे को एटम का बिल्कुल नहीं पता है और आप उसे बताना चाहते हो कि एटम क्या है. What will you tell them? The first thing that you tell them. Sir, an atom is the smallest unit of an element which may not be broken down further using any chemical reaction. Interesting. So let me write that in here. Atom is the smallest particle that can't be broken down chemically. Is that what you said?
Yes, sir. Good. That is absolutely correct. But I don't understand what this is. Or maybe somebody who doesn't know atoms, उसको बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि क्या है. Let me just break it down. So atom उसका नाम है. वैसे atom का atom नाम नहीं होना चाहिए. The name is wrong. But anyways, it's the smallest particle. Let's just stop there. Do you know of anything that is smaller than an atom? Yes, sir. An atom consists of subatomic particles as well. Excellent. There's a whole zoo of these subatomic particles. 200 के करीब तो वो हैं. Protons, electrons, neutrons are just a start of what there are. It's not the smallest particle, but there's a special thing in there. We have the ability to break these particles. Up molecule लो, there are chemical methods through which you can break it down into the atoms or ions. दोनों में डिवाइड कर सकते हो आप. एक न्यूट्रल चीज पकड़ी है आपने, उसमें से न्यूट्रल एटम्स निकाल लो, आपने उसमें से चार्ज पार्टिकल्स निकाल लो. An example is an acid. Molecule होता है acid का, and we get positive and negative ions out of it. Hydrogen ions निकाल लेते हैं उसमें से. Water है, molecule है, H plus OH minus ions निकाल लेते हैं. I'm saying this to you because I know that you guys are in grade 11 and you're familiar with these things. Sodium chloride है, electrolysis करो, atoms निकाल लो उसके, chlorine molecules निकाल लो उससे. All of that is very much possible. We have the technology to do that. Sure, it took us a long time, over 8,000 years, to get to the point where we are today. और अभी भी हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता. But we are far ahead of where our ancestors were. But we are still stuck with one idea that atom is still there as the fundamental thing. Why? Because so far we have absolutely no way, and we are very certain कि हो भी नहीं सकता कोई मेथड जो केमिकल मेथड हो लेकिन हम एटम को तोड़ सकें. हम मॉलिक्यूल को तो केमिकल मेथड से तोड़ के एटम बना लेते हैं, हम आयन को तोड़ के मॉलिक्यूल और एटम बना लेते हैं. हम एटम को तोड़ के केमिकली ये दोनों नहीं बना सकते, कोई और एटम भी नहीं बना सकते केमिकली. नेचुरली दूसरे प्रोसेसेस से, जिनको हम फिजिकल प्रोसेस कहेंगे, एटम तो खुद भी टूटता रहता है. There is a thing called radioactivity or radioactive atoms or radioisotopes. Radioactivity is when an unstable nucleus or nuclei breaking down, releasing energy and or particles. Sometimes they give just energy, sometimes they give other particles. And they break down into smaller and smaller things. So uranium है, उसको हम तोड़ते हैं, naturally टूटता है, और krypton और barium में बन जाता है. You don't need to remember that. But वो होता है, naturally होता है. Carbon 14 है, break down होके दूसरे elements में convert हो जाता है. There are atoms that are naturally doing that. But this is a physical process. This is a nuclear process. This is not a chemical process. In fact, ये न्यूक्लियर प्रोसेस भी सीखने पे इंसानों ने बहुत मेहनत और बहुत खर्चा और बहुत ज्यादा अच्छे दिमाग, दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट लोग, they were involved at one time, and it took us over 30 years to get to a point where we were able to break down the atom physically. The first time we did that was in US. वहां पे एक डेजर्ट है, वहां पे उन्होंने ट्रिनिटी साइट पे फर्स्ट टाइम उसको डेमोन्स्ट्रेट किया था. We call that thing an atomic bomb. But now we have other more peaceful ways of using that energy that it releases. क्योंकि वो एनर्जी रिलीज करता है. So radioactivity है, और एटम से हम छोटे पार्टिकल्स फिजिकल प्रोसेस बना लेते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेस बना लेते हैं, केमिकल प्रोसेस नहीं बनाते, विच इज व्हाट मेक्स एटम सो मच मोर पेक्यूलियर. बिकॉज हर एलिमेंट में एटम है, हर कंपाउंड को तोड़ के आप एलिमेंट बना लेते हो और हर एलिमेंट में एटम है, हर मिक्सचर से आप सेपरेट करके एटम निकाल सकते हो, बट एटम को किसी भी केमिकल प्रोसेस से आप तोड़ नहीं सकते. ठीक है, मान लेते हैं बात. अब जरा रेडियो एक्टिविटी की तरफ चलते हैं. रेडियो एक्टिविटी क्या है? Unstable nucleus breaking down, releasing energy. One of those particles that does this
is an alpha particle. Again, this is more important for physics, not for chemistry. But alpha particle में, one thing that you need to know is that there are sources of alpha particle जो कि बार-बार alpha फेंकते रहते हैं, बाहर निकालते रहते हैं, and they have a positive 2 charge. All alpha particles have positive 2 charge. Now, this was something that was known to this guy in Cambridge University. काफी स्मार्ट आदमी था. अर्ली 1900s की बात है. आज से 120-25 साल पुरानी बात बता रहा हूं आपको. Pretty recent, right? Now, here's the thing. That guy was working with a gold foil. Do you know what a gold foil is? A gold foil is simply a very thin sheet of gold. Okay. So there was this guy, Rutherford, and he had 2 of his students. I call these names because in लोगों ने बहुत काम किया and we owe a lot to them. So one was Geiger and one was Marston. They did a lot of work. So Rutherford was the professor and he had 2 students, Geiger and Marston. They worked in together. And sorry, he was at University of Manchester, if I'm not wrong. He wasn't at University of Cambridge. Anyways, so he had a gold foil. उसने वो gold foil रखा. And for some reason, he thought of doing an experiment. He did many experiments, but one of those experiments was कि he wanted to know कि ये जो matter होता है, ये खाली होता है या ये filled up होता है. Simple. Like there's a wall in front of you, right? वो wall खाली है या filled up है? बताओ. आप जिस कमरे में बैठे हो उसकी wall filled up है. How do you know that? Sir, it also has particles as every matter does. Okay. Kinetic theory कहती है उसमें particles हैं, ठीक है, लेकिन क्या वो खाली है या वो filled up है? उसमें कितनी space होगी आपके ख्याल में? उस wall के अंदर कितनी space होगी? In reality, wall खाली है. In fact, not just the wall, everything is empty. कभी अकेले बैठो ना, you will feel that emptiness. We are all empty inside, unfortunately. So empty that 8 billion of us humans, इन सब के अंदर से जो space है ना वो सारी निकाल दो, जो बाकी बचेगा ना वो इतने से piece है. The rest of it is just space. खला है. But उसको नहीं पता था ये बात. He just wanted to know. He had a question. क्या मैटर अंदर से खाली होता है या भरा हुआ होता है? ये सिंपल सा सवाल है. So if I asked you कि ये दीवार आपकी खाली है या भरी हुई है, so one simple way of doing that would be एक बॉल पकड़ो, दीवार पे मारो. अगर खाली होगी दीवार तो वो बॉल उसके अंदर से गुजर जाएगी वॉल में से, right? The ball will go right through if it was empty, right? But if it is filled up or if it is like dense, so the ball will come back. कभी जिंदगी में किया? Have you ever played game of squash? या वैसे बॉल मारी है दीवार पे? क्या होता है? Have you ever seen a ball go right through the wall? कभी भी नहीं देखा? क्या हो गया? रदरफोर्ड को भी यही लगता था कि it shouldn't go right through. उसको लगता था वापस आएगी, right? जैसे हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है. So he was like, okay, I'll take a wall, which is this gold foil, and I'll take a ball, but that ball will be a very fast bullet. और मैं बुलेट मारूंगा इस गोल्ड फॉइल के अंदर. और अगर ये खाली हुआ तो वो अंदर से गुजर जाएगी और अगर वो भरा हुआ तो वो वापस आ जाएगी. अब ऑब्वियसली एनीबडी वुड बी लाइक, क्या बात कर रहे हो? ऑब्वियसली वो वापस ही आएगी ना. व्हाट डू यू थिंक? वापस ही आनी चाहिए ना? क्या ख्याल है? आर यू इवन लिसनिंग या सो गए हो? No, sir, listening. So
we should expect that if he shot a bullet at this gold piece of gold, so we would expect that the bullet should come back, right? Okay. Now he had a bullet which was really small and really fast, and that bullet was alpha particles. So उसने एक source पकड़ा, उसमें alpha particles हैं, वो उसने shoot किए इसके ऊपर. So at a very high speed, these alpha particles came towards this gold foil. Here's what happens. He shot many of them, and obviously they're really small, तो वो देख नहीं सकता था उनको. So what he did was that he had a circular screen around them कि अगर particle आएगा ना तो वो वहां पे glow करेगा. ठीक है? So अब क्या हुआ कि वो particle उसके अंदर से कैसे आया? अब उसको लगता था कि हाँ या तो वो वापस आएगा अगर वो भरा हुआ, और एट दैट टाइम पीपल थॉट कि नहीं, एटम जो है ना उसके अंदर वो जगह जगह पे प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो उसके अंदर से जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं है वहां से वो गुजर जाना चाहिए. सो दैट्स व्हाट ही थॉट, कैसे आएगा और सीधा निकल जाएगा, इधर से आएगा ऐसे सीधा निकल जाएगा, इधर से आएगा ऐसे सीधा निकल जाएगा, और अगर किसी पॉजिटिव चीज को लगा या अगर किसी नेगेटिव चीज को लगा तो साइड से निकल जाएगा. दैट्स व्हाट दे थॉट, बट दे वर सरप्राइज्ड व्हेन मोस्ट ऑफ इट simply went right through. बिल्कुल भी वो bend नहीं होया. Most of it. Some of them bent. Some of them came and bent. Angle पे चले गए. But most surprisingly, some of them came and went back. That is something they were not ready for. देखिए हमें पता है कि एटम के अंदर जहां पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव नेगेटिव चीज नहीं होगी, उनको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नहीं पता था. जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव चीज नहीं होगी वहां से सीधा आगे चले जाना चाहिए उसको. बट व्हाट इज दिस? एक अल्फा पार्टिकल जो कि बहुत बड़ी चीज है, वो एक बहुत छोटे गोल्ड फॉइल में से वापस आ रहा है. व्हाट द, कैसे? ये ऐसे है कि आप एक एंटी टैंक गन पकड़ो और एक टिश्यू पेपर पे शूट करो और वो वापस आके आपको ही लग जाए. ये ऐसे है. ही वॉज लाइक, एक सेकेंड, हाउ इज दिस पॉसिबल? एक तो ये कि जो सारा आगे जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, राइट? क्योंकि ज्यादातर तो जा रहे हैं. मुझे एक बात बताओ, अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसको कौन सी चीज रिपेल करेगी? सर पॉजिटिव. पॉजिटिव. बट वो पॉजिटिव रिपल्शन तो हो रही है, तो इसका मतलब है एटम के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव है. बट वो जो पॉजिटिव है वो बहुत कम है, क्योंकि उसने लाखों के लिहाज से ये बुलेट्स, ये अल्फा पार्टिकल शूट किए थे, बट ओनली अ वेरी स्मॉल अमाउंट, लेस देन 1% केम बैक. 2000 भी नहीं थे जो वापस आए. दैट शोज कि वो जो चीज है ना जो इसको पॉजिटिव को रिपेल करी है, वो बहुत छोटी है. इट्स अ रियली रियली स्मॉल थिंग, बट इट इज अ पॉजिटिव थिंग. एंड बिकॉज उसने इतना पावरफुल तरीके से उसको रिपेल किया, इसका मतलब है कि वो बहुत हैवी भी है. सो दिस रिपल्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सीधे चले गया, दैट शोज मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी. जो रिपेल होया है उसका मतलब है कि देयर इज अ स्मॉल पॉजिटिव थिंग इन देयर. हाउ डू वी नो इट्स स्मॉल? बिकॉज अ वेरी स्मॉल अमाउंट इज रिपेल्ड. ज्यादातर सीधे चले गए, और जो रिपेल हुए हैं वो बहुत स्ट्रांगली रिपेल हुए हैं. दैट शोज कि वो बहुत डेंस, बहुत पॉजिटिव चीज है जो भी सेंटर में है. ही कॉल्ड दैट थिंग, उसने बायो पढ़ी हुई थी, उसने कहा था एनिमल सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, तो उसने कहा ये भी न्यूक्लियस ही है. दैट्स व्हाट ही थॉट. एक्चुअली में उसने वहां से नाम ले लिया, कॉपी कर लिया. तो उसने कहा एटम जो होता है, it has a nucleus and it is empty on the rest of it. We'll call that thing a space. And this nucleus has something that's positive in there. ठीक है जी, मान लेते हैं.
देयर इज अ पॉजिटिव थिंग इन देयर. उसको नहीं पता था, बाद में हमने उसको प्रोटॉन का नाम दे दिया. ठीक है. बट हियर्स अ क्वेश्चन. किसी भी चार्ज चीज को आप टच करो, इफ समथिंग इज पॉजिटिव या नेगेटिव या कुछ भी है, आप उसको टच करो, आपको करंट लगना चाहिए. You should get shock, right? Because it has charge and that charge should flow somehow. But ऐसे तो नहीं होता. गोल्ड को कभी टच करो, शॉक लगता है उससे? मोस्टली नहीं लगता. तो ये क्या बात हुई? द ओनली वे शॉक नहीं लगेगा वुड बी कि वहां पे कोई ना कोई नेगेटिव चीज भी है. सोचेंगे ये जो स्पेस है ना उसकी, ये नेगेटिव है. उसको नहीं पता था. टुडे वी नो दैट दैट स्पेस हैज इलेक्ट्रॉन्स इन देयर. बट हियर्स अनदर प्रॉब्लम. न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं? होते हैं. मुझे जरा बताएं ये रिपेल क्यों हो रहा था? न्यूक्लियस ने इसको रिपेल क्यों किया था? Because sir, the nucleus consists of the positive part charge. तो फिर जब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ आया तो फिर रिपेल हो गया. वेरी गुड. तो जरा एक बात बताएं, अगर पॉजिटिव अल्फा को पॉजिटिव न्यूक्लियस रिपेल कर सकता है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो मल्टीपल प्रोटॉन है वो एक दूसरे को क्यों नहीं रिपेल करते? And Sir, that they was a have a valid strong question. force of attraction between them. Excellent. उस वक्त उन्हें नहीं पता था ये बातें, बट दैट इज हाउ दे स्टार्टेड फिगरिंग इट आउट कि नॉट ओनली आर प्रोटॉन्स बीइंग पुल्ड टुगेदर बाय वेरी स्ट्रांग फोर्स, कि वो एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं लेकिन वो उनको जाने नहीं देती. जैसे हमने काइनेटिक थ्योरी में देखा कि सॉलिड में बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो प्रोटॉन में भी होगी. एंड नॉट जस्ट दैट, देयर इज आल्सो समथिंग इन द न्यूक्लियस जो कि न्यूट्रल है. इट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड इट मेक्स देम स्टेबल. और अगर कभी स्टेबल ना हो तो रेडियो एक्टिविटी की तरफ निकल जाता है. वो कभी प्रोटॉन बाहर फेंक रहा है, कभी वो न्यूट्रॉन को बाहर फेंक रहा है. वो उसमें से एनर्जी भी निकलती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स भी निकलते हैं. प्रोटॉन भी टूट जाता है, न्यूट्रॉन भी टूट जाता है. उसका बुरा हाल हुआ है क्योंकि उसके अंदर ये रिपल्शन होती जा रही है. एंड ऑफ कोर्स देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट आर देयर. एंड दिस whole idea, this part, can you guess how long it took them to just complete this picture? Almost 30 years. And then it gave them so many new questions, they had to invent a whole new kind of math just to deal with it. Quantum mechanics. Because electron does not behave like planets. हमने लगता था कि इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते होंगे. तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को जाके फौरन प्रोटॉन के अंदर जाके लगना चाहिए उसको, जैसे एस्ट्रॉइड आके जमीन पे गिरता. लेकिन ऐसा नहीं होता ना. ऐसा इसलिए नहीं होता इनका. हाँ, सूरज भी तो अर्थ को अट्रैक्ट करता है, अर्थ तो उसके गिर्द घूमती है, जाके लगती तो नहीं है उसके अंदर. तो इलेक्ट्रॉन का भी ऐसा ही कुछ होगा. बट देन इट टर्न्स आउट ऐसा नहीं है. बिकॉज इफ थिंक अबाउट इट, अगर सन है और एक अर्थ है, तो सन के गिर्द अर्थ घूम रही है, नो वरीज राइट, घूमते जा रही है बिलियंस ऑफ ईयर से. इमेजिन अगर इसी ऑर्बिट में एक और भी अर्थ आ जाए, क्या अब ये दोनों इसी ऑर्बिट में घूम सकती हैं? क्या होगा? ये इसमें लगेगी जोर से आके, धमाका होगा, आर्मागेडन आ जाएगी. बट व्हेन दे डिड सम मेजरमेंट्स, टर्न्स आउट इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, एक ही तरह के इलेक्ट्रॉन्स एक ही तरह घूम रहे हैं, एक ही तरह के पाथवेज में. एंड दे वर शॉक्ड. ऐसा कैसे होता है? कोलाइड नहीं करते, वो हर तरह से आइडेंटिकल है. एंड देन दे फिगर्ड आउट कि जैसे अर्थ के ऑर्बिट फिक्स्ड है, वेनस का ऑर्बिट फिक्स्ड है, वेनस का, इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट फिक्स नहीं है. Electrons don't go around in circular paths. Electrons go around with one fixed thing, and that is their energy. उनका path fix नहीं है, उनकी energy fix है, and that they called shells. क्या होते हैं shells? Just like you guys are in grade 11. What grade were you in last year? 10. 10.
अभी आप ग्रेड 11 में हो, लेकिन हाफ ईयर गुजर गया उसको. कैन वी से यू आर नाउ इन ग्रेड 11 एंड हाफ? यू कांट, राइट? या आप ग्रेड 11 में हो सकते हो या ग्रेड 10 में हो सकते हो. You can't be somewhere in the middle. And that's how electrons are. Shells are like grades to them. Electrons can be in one shell or the other shell, बीच में नहीं हो सकते. Okay. अच्छा. How do you know that you are in grade 11? Or how do we figure out कि ये बच्चा grade 11 का और ये बच्चा grade 10 का? What is that one thing that you have that a grade 10 students might not have? These grades are basically grades of knowledge. You have demonstrated कि 10th के बच्चे को जितना आना चाहिए, आपने एग्जाम दिया, आपने बताया कि मुझे उतना आता है. And that's how you get promoted to grade 11. Humans, students, we have grades based on the knowledge that we have. You can't show that knowledge as a physical thing. It is something you can demonstrate कि हाँ आपको आता है. Just like that, shells में electrons के पास fixed energy होती है. Just like हमारे पास knowledge है, वैसे उनके पास energy है. That energy of one shell and the next shell will be different. Just like the knowledge of grade 10 and grade 11 is different. So electrons can be in one shell or the next shell, बीच में नहीं हो सकते, or depending on their energy, they will be in those shells. And जितना ज़्यादा energy होगी, उतना ज़्यादा atom से nucleus से दूर जा सकता है. इसका मतलब ये नहीं कि वो होता है, वो जा सकता है. It has the ability to do that. So the idea that now we are going to put is that there's a nucleus in there, and then there's first level of shell, first level of energy, second level of energy, third level of energy, fourth level of energy, and the electrons are there. ठीक है? But then they also wanted to show कि वो electrons nucleus के गिर्द घूमते हैं. They don't go in circular paths, but वो बस उसके गिर्द घूमते हैं. So they wanted to show that, तो उन्होंने कहा कि इसको ना ऐसे circle बना दो. To show कि there are these levels of energy and the electrons are here and they go around the nucleus. So shells are not paths, shells are levels of energy. So electrons can be in these levels of energy. Just like अगर किसी स्कूल में grade 10 में कोई student ना हो तो grade 10 वहां पे नहीं होती ना, वैसे ही अगर किसी shell में electron ना हो तो वो shell ही नहीं होता है. इलेक्ट्रॉन किसी एक शेल में हो सकता है, दूसरे में हो सकता है. जैसे आप 10 में हो सकते हैं या 11th में हो सकते हैं. 10 वाले का नॉलेज 11 वाले से कम है, तो फर्स्ट शेल वाले की एनर्जी सेकंड शेल वाले से कम है. एंड डिपेंडिंग ऑन देयर एनर्जी दे डू दैट. एंड लास्ट पॉइंट, दीज शेल्स हैव कैपेसिटी कि उनमें कितने आ सकते हैं. जैसे स्कूल्स की एक लिमिट होती है कि जी ग्रेड 11 में हम 100 स्टूडेंट्स रखेंगे, इससे ज्यादा स्टूडेंट नहीं रखेंगे, हमारे पास इतनी क्लासेस नहीं है, हमारे पास इतने टीचर्स नहीं है, व्हाटएवर. बट देन वो कैपेसिटी कभी भी फुल नहीं करते, हम लोग कोशिश नहीं करते. आपकी क्लासरूम में हो सकता है 50 बच्चे बैठ सकते हो, लेकिन हो सकता है उस पर समझ ही किसी को कुछ ना आए. सो दैट इज व्हाई वी कीप देयर अ प्रेफर्ड नंबर कि यार 30 से ऊपर स्टूडेंट्स नहीं करने हैं. सो द कैपेसिटी ऑफ अ शेल इज जस्ट लाइक दैट. उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. इनफैक्ट एवरी शेल कैन हैव n square pairs of electrons. Instead of saying pairs, I can say 2n squared electrons उसके अंदर हो सकते हैं. First shell में 2 times 1 square 2, second shell में 2 times 2 square 8, third shell में 2 times 3 square 18 different electrons हो सकते हैं. But there's a preferred number. हम वो पूरा fill नहीं करना चाहेंगे, तो हम 2 और 8 करते हैं. There are other preferred numbers as well, लेकिन O levels और IGCSE में we stick to these. So 2 in the first shell छोटा होता है, उसके अंदर सिर्फ 2 आ सकते हैं for reasons that we don't study in O levels. And then the next few shells, उनमें 8 पे जाके there is a preference that they have. 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं, but 8 is a preferred number that they have. तो वो कोशिश करते हैं कि उतना ही रखें. And this whole thing of how electrons are arranged, that's called electronic configuration. Okay, so what do we know so far? We know
that these people figured out that atom is there. It's the smallest particle that you cannot break down chemically, but you can break down through physical and nuclear methods. और वो जो naturally करता है उसको radioactive बोलते हैं. और वो unstable होते हैं, वो energy देते हैं. One of those they used to figure out कि atom क्या होता है. वो क्या था? वो positive था, उन्होंने उसके ऊपर फेंका. उसको उन्हें पता लगा कि वो ये तो repel हो रहा है. इसका मतलब है उसके अंदर nucleus positive है. और वो बहुत थोड़े एरिया से repel हो रहा है. इसका मतलब न्यूक्लियस बहुत छोटा है और ज्यादातर स्ट्रेट जा रहे हैं. इसका मतलब है कि the atom is mostly empty. In that emptiness of the atom, there is a negative charge that's flowing around, randomly moving around. That is because the charge is in electrons. These electrons are in shells, and those shells are occupied by these electrons of different energies. Shells are not physical paths. Shells are levels of energy, and the bigger shells have more energy. Electron can be in one shell or the other shell. Electron can go from one shell to another, but not in the middle. Okay, and these shells have capacities, but they don't try to fill them to the full. They try to fill them to 2 in the first case maximum, या बाकी के केस में 8 पे जाके they try to just stop and put the electron in the next shell after that. And that's electronic configuration. This model is telling me that nucleus is in the center. Shells are around it where the electrons are going around it, but shells are not paths, and these shells have capacity. So जो अभी हमारे सामने एटम बना हुआ है ये अनस्टेबल है, और आफ्टर अ व्हाइल जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन फौरन नीचे वाले शेल्स में आना शुरू कर देंगे, बिकॉज दे ट्राई टू गेट टू पॉइंट वेयर देयर इज स्पेस, एंड फर्स्ट शेल में अब नहीं आ पाएगा क्योंकि वो तो 2 हो गया. सो दे विल ट्राई टू गो टू द सेकंड शेल. जब तक वो नहीं फिल होता अपनी प्रेफरेंस का, और फिर उसके बाद वो थर्ड शेल में जाएंगे, उसके बाद वो फोर्थ शेल में जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन देयर प्रेफरेंस. ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस? No, sir. Sir, I have Awesome. a question. Go on. What is it? Can we move to the diagram जो ऊपर है? Gold This foil one? में. Yeah. Yes. तो मुझे ये तो समझ आ गई कि एक कुछ तो डायरेक्टली बिल्कुल रिपेल हो गए and then some of them are just shooting straight, right? तो मेरा क्वेश्चन था कि जो थोड़े बहुत बेंड भी हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? So if something was coming close to the nucleus but not coming head on, वो साइड से आई है, तो वो क्या करेगी? एज केस, वो एक एंगल पे रिपेल हो जाएगी. Alright. Yeah. Okay. Your homework is to write the configuration of first 20 elements. How do you know the element? हर element का proton number fix होता है. So hydrogen का 1 है क्योंकि उसमें 1 proton है, helium का 2 है उसमें 2 proton है. And tomorrow we'll talk about कि proton, neutron, electron change होने से क्या होता है atom को. But अभी के लिए हमने सिर्फ atom को देखना था. So I hope you guys understand this. And we'll keep on adding things to this diagram. Okay. Thank you so much. See you in the next class. Allah Hafiz. 7:10 tomorrow. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz.